Hi, good evening, everyone. So, beta, in the upcoming lectures, we will go ahead and we will try to go through the different theories of liquidity. Okay. In particular, now this is where you try to read different schools of thought. हमें अलग-अलग school पढ़ने चाहिए, school of thought, कि what kind of theories were introduced by which kind of economist. Now, in particular, I am going to go ahead and do 3 theories of liquidity with you. Let me just help you understand that. तो जो हम पहली थ्योरी करेंगे बेटा लिक्विडिटी की, that will be called as Chicago approach. In today's lecture, in this lecture, I will be focusing on Chicago approach. This video lecture is on Chicago's approach. ठीक है? The second approach for theory of liquidity, that will be Gurley-Shaw approach. In the next video lecture, we will focus on the Gurley-Shaw approach of theory of liquidity. Okay, beta. And the third approach that I will be talking about, that will basically be the, so it's not an approach actually, but I will be talking about this also. उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम similarities and dissimilarities between the two approaches ये डिस्कस करेंगे कि शिकागो अप्रोच और गुरली शाह अप्रोच में व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड देन बेटा आई विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स आल्सो हियर व्हिच इज द Radcliffe Sayre version of liquidity. Radcliffe Sayre version of liquidity. So basically, over the next 3 lectures, जो अगले 3 lectures हमारे होंगे, उसमें आज हम पढ़ेंगे what is Chicago approach. Today we will be focusing on Chicago approach. In the next lecture, I will be focusing on Gurley-Shaw approach. And in the next lecture, I will be focusing on the Radcliffe approach. ठीक है? Okay, beta. Let's start with Chicago approach. But before I do Chicago approach, मुझे एक conventional definition of money देना है. So what is conventional definition? बेटा, whenever we say conventional definition of money, जब भी हम conventional definition की बात करते हैं, conventional definition basically goes ahead and we are referring to classical approach. जो सबसे शुरुआती approach आई to the theory of liquidity, that is the conventional definition, and we want to go ahead and we want to focus on this conventional definition. ठीक है जी? तो जब हम इस conventional definition की बात करते हैं, तो according to the conventional definition, money, it includes checkable deposits, it includes currency in hand, and it includes demand deposits. Conventional definition के हिसाब से, according to conventional definition of money, money वो फॉर्म है जो बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म होगा. The most liquid form of money, जो easily कैश में कन्वर्ट हो जाए, only that is money. सिर्फ वही मनी कहलाएगा. Right? So according to the conventional definition, checkable deposits, जो चेक होते हैं, जो आप बैंक में you deposit it और वो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में. So checkable deposit, currency in hand, जो करेंसी ऑलरेडी आपके हाथ में है, वो तो है ही फॉर्म ऑफ कैश में,
and demand deposits. Demand deposit means, as the word suggests, जैसे ही आप बैंक से डिमांड करोगे, the moment you will demand it from the bank, you will get that money. So all three of these, this forms the conventional deposit. इसको हम conventional deposit बोलते हैं. This is the most liquid form of money. Now let us talk about Chicago approach. Chicago approach क्या कहते हैं? So Chicago approach basically is the approach which is related to Milton Friedman. ये approach Milton Friedman ने दी थी. And there were some other monetary theorists of Chicago University. तो जितने भी हमारे Chicago University के monetarist थे, monetary approach के economists थे, those with the prominent name of Milton Friedman, इसमें Milton Friedman ज्यादा famous रहे हैं, उन्होंने Chicago approach दी है. That is how Chicago approach came into being. ठीक है. According to Friedman, बेटा ये बहुत important statement है. You need to remember this statement. So according to Friedman, money is temporary abode of purchasing power. बेटा what is abode? Abode किसे बोलते हैं? Anyone. So when we say abode, abode basically goes ahead and it means the place. किसी भी जहां पे भी आप रहते हो, wherever you live, that is called as abode. So when we say money is temporary abode of purchasing power, मतलब मनी आपको बस एक purchasing power दे रहा है, कुछ भी खरीदने की आपको क्षमता दे रहा है. It is giving you capability to go ahead and buy anything. That is why it is called as temporary abode of purchasing power. Now, according to Friedman and conventional school, money includes demand deposit, check, currency, but ये हो गया conventional school, sorry. Conventional school के according, money में, ये हमने बताया ना, conventional school के according, money की जो definition है, उसमें checkable deposit, currency in hand और demand deposit, it means most liquid form of money will be included. पर अब जो ये शिकागो स्कूल आया, अब जो फ्रीडमैन आए, they adopted M3 as better definition of money, which includes currency and checkable deposit, commercial bank time deposit, fixed interest bearing deposit placed within the commercial bank. तो ये जो हमारे शिकागो स्कूल आया, शिकागो स्कूल ने बेसिकली बोला कि अरे अगर हमारे पास कोई एफडी भी है, इवन इफ वी हैव एन एफडी, तो बैंक में इमीडिएटली एफडी ब्रेक हो जाती है. इवन इफ वी हैव टाइम डिपॉजिट, आजकल आप देखो, अगर सपोज आपने अपनी कोई बैंक की एप्लीकेशन है, सपोज एचडीएफसी बैंक, हाँ, यू हैव एन एप्लीकेशन ऑफ एचडीएफसी बैंक, बेटा यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ब्रेक डिपॉजिट, और जैसे आप ब्रेक डिपॉजिट पे क्लिक करोगे, द डिपॉजिट वुड बी ब्रोकन, वो एफडी ब्रेक हो जाएगी. सो देन द शिकागो स्कूल सजेस्टेड, उन्होंने ये बात सजेस्ट की दैट यू डोंट हैव टू गो अहेड एंड यू डोंट हैव टू वेट. ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, ये जो टाइम डिपॉजिट हैं, ये भी इमीडिएटली पैसे में कन्वर्ट होते हैं. दे आर इक्वली लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी. तो इन द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ मनी, द मोमेंट शिकागो स्कूल केम इनटू पिक्चर, जैसे कि फ्रीडमैन आए, उन्होंने बोला कि इसी में वी विल गो अहेड एंड इंक्लूड टाइम डिपॉजिट्स ऑल्सो. टाइम डिपॉजिट भी इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, एंड वी विल इंक्लूड फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑल्सो. एफडी भी कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं. वी कैन इजीली ब्रेक एंड एफडी ऑल्सो. तो ही इंक्लूडेड दीज टू थिंग्स ऑल्सो. और जब उन्होंने इन दोनों को भी इंक्लूड कर दिया, तो अब जो हमारे पास ये सब आया, ही कॉल्ड दिस एज M3. एंड उन्होंने बोला कि दिस इज मनी अकॉर्डिंग टू मी. मेरे अकॉर्डिंग मनी की जो डेफिनेशन है वो M3 फॉर्म ऑफ मनी है. इन दिस M3 फॉर्म ऑफ मनी, आई विल इंक्लूड चेकेबल डिपॉजिट, करेंसी डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. मैं ये सब कुछ ही इंक्लूड करूंगा. इज दिस क्लियर? तो देखो ध्यान से बेटा, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल अप्रोच एज द डेफिनेशन ऑफ मनी, एज टाइम डिपॉजिट आर नॉट रेडिली स्पेंडेबल, सो सच डिपॉजिट डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो कन्वेंशनल स्कूल ऑफ थॉट जो था, जो पुराना स्कूल था, जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था, दे यूज्ड टू गो अहेड एंड दे यूज्ड टू से कि टाइम डिपॉजिट, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मनी.
वो तो डिपॉजिट किया हुआ पैसा है, आप एक टाइम से पहले उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो, एंड देयरफॉर इट इज नॉट इजीली स्पेंडेबल, आप उसको एकदम इजीली स्पेंड नहीं कर सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल अप्रोच, दिस टाइम डिपॉजिट, दिस फिक्स्ड डिपॉजिट, इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ एक्सचेंज. वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, इट वॉज नॉट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बट अकॉर्डिंग टू द शिकागो स्कूल ऑफ थॉट, उन्होंने बोला नो 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 नो, ये भी तो ब्रेकेबल है, यू कैन ब्रेक दिस डिपॉजिट्स ऑल्सो, यू कैन गो टू द बैंक, immediately break the deposit and convert it into cash, and वो भी medium of exchange कहलाएगा, that will also be medium of exchange. So by doing so, they widened the scope of concept of money. उन्होंने जो money को जिस तरीके से लोग सोचते थे, the way people used to think about money, उस perspective को widen up कर दिया, they widened that concept. हाँ, okay. Now, two reasons for inclusion of time deposit in the definition of money. तो अकॉर्डिंग टू शिकागो स्कूल ऑफ थॉट बेटा, उन्होंने दो मेन रीजंस दिए हैं कि क्यों हमें टाइम डिपॉजिट को मनी की डेफिनेशन में इंक्लूड करना चाहिए, व्हाई इट शुड बी इंक्लूडेड. लुक इनटू द फर्स्ट रीजन बेटा. नेशनल इनकम इज हाईली कोरिलेटेड विद M3 एंड लेस कोरिलेटेड विद M1. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज आस्क्ड वेरी ऑफन इन एग्जाम्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है एक. तो ये बताती है कि अगर हम किसी भी इकोनॉमी का NNP निकालें, नेशनल इनकम निकालें, तो दिस इज मोर कोरिलेटेड विद M3 rather than M1. मतलब when M3 will increase, then it will be affected more, when M3 will decrease, it will be affected more. जो ये कोरिलेशन है नेशनल इनकम का, इट इज मोर विद M3 rather than M1. That is why M3 को यूज करना as a form of money will be better. It will be better if we use the definition of money as M3. So M3 is better predictor of national income. So ये एक अच्छा रीजन रहेगा कि क्यों हमें शिकागो स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से मनी की डेफिनेशन को यूज करना चाहिए, बिकॉज नेशनल इनकम इज मोर कोरिलेटेड विद M3. Second reason बेटा, they argued that the time deposit are very close or perfect substitute for currency and demand deposit. तो इन्होंने बोला कि ऐसा दूर से देखने में लग सकता है कि टाइम डिपॉजिट जो है वो एकदम अलग चीज है, बट टाइम डिपॉजिट इजीली आप ब्रेक कर सकते हो. इजीली आप अपना बैंक में जाकर टाइम डिपॉजिट को ब्रेक करवा के वहां से पैसा रिलीज कर सकते हो. यू कैन इजीली ब्रेक अ टाइम डिपॉजिट एंड यू कैन गेट योर मनी. So since time deposit is easily breakable, you can easily go ahead and you can get money in place of time deposit. Therefore, time deposit can be used as a substitute for demand deposit and currency. And because it can be used as a substitute, therefore it should be added to the definition of money. It should be added to the definition of money, as this is acting like a perfect substitute for currency in hand and demand deposit. So these are the two reasons given by Chicago School of Thought, and believe me, they will come in exam. ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है, that why Chicago School of Thought included time deposit in the definition of money. तो दो रीजन हम याद रखेंगे, that the national income is more correlated with M3, and in M3 we are including time deposit, and these time deposits, they are good substitutes of your demand deposit and cash in hand. Okay beta, ठीक है. So this is it that I wanted to teach. I wanted to talk about Chicago approach of liquidity. In the next class we will go ahead and we will discuss Gurle Shah approach. Okay, thank you.